Hi everyone. Today we are finally starting kidneys. Now, kidneys are really underrated. They do a lot of work in our body, like they don't normally get the due credit that they deserve. So let's talk about kidneys आज, which is first of all talking about the functions of the renal system. तो kidneys का जब भी हम सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये इनका excretory function है, ये यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उन्हें रिमूव करता है and it somehow makes the urine, and that's how it removes the waste products from the body. Yes, that is one of the most common features of it, one of the most common functions that it performs. लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत ही crucial task हैं जो कि बाकी कोई भी organ नहीं handle कर सकता, but kidneys के ऊपर वो पूरी responsibility होती है to undertake those tasks and perform them carefully. उसमें से the four major roles are first and foremost excretory function that we all know. The other is the regulatory function. इसका एक बहुत regulatory, बहुत important regulatory function है जिसमें ये different electrolytes को regulate करके रखता है. Then you have the endocrine function. What do we mean by endocrine? Okay, it can also secrete some sort of hormones or concept of hormones. And we have three very important hormones that the kidney secretes. We'll discuss about them as well in a while. And the fourth very important function is the metabolic function. तो अब आपसे कोई भी पूछे कि किडनी के क्या फंक्शन है, is it just excretory function? No, it has excretory, metabolic, endocrine, and very important regulatory function. So let's not overlook the remaining three functions. अब इन सब के बारे में बात करते हैं इन डिटेल, स्टार्टिंग ऑफ विद एक्सक्रीटरी फंक्शन. क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बॉडी को एक्सक्रीट करनी होती है नॉर्मली, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं या लेट्स से एक्सेस में होती हैं, सो आवर बॉडी हैज टू रिमूव देम. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं कि मेटाबॉलिज्म हैज टेकन प्लेस, उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स रह गए हैं विच आर वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन्हें रिमूव करने की जिम्मेदारी किडनीज की होती है. और उनमें कौन कौन से होते हैं? क्रेटिनिन एंड यूरिया. वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिनिन and urea. So creatinine and urea. Now do not confuse creatine and creatinine. Creatine is basically source of energy for muscles. So हमारे muscles को जितनी भी energy मिलती है वो उससे मिलती है creatine से. और creatinine क्या है? जब ये energy मिल गई muscles को तो ये creatinine break down होगा into creatinine. So creatinine is basically a waste product which is formed by the breakdown of the creatine. So creatinine is the waste product. Do not confuse the two. And urea, that is the end product of the amino acid metabolism. So जब amino acid का metabolism हो जाता है उसका end product होता है urea. जब muscles को energy मिलती है from creatine, वो creatine breakdown होता है तब आपको मिलता है creatinine. So these are two very important waste products जिनको रिमूव करने का काम होता है किडनीज का. ठीक है, सो दिस इज एक्सक्रीटरी फंक्शन. उसके अलावा सिर्फ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ही नहीं, उसके अलावा ड्रग्स को रिमूव करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल किडनीज प्ले करती हैं, एंड टॉक्सिन्स. Now, whenever you're taking medicines, all the medicines that you have taken in your life from day one, it's not that they get accumulated in your blood or they get stored in some of your tissues and cells. No, that doesn't happen. Obviously, drugs, once they've performed their function, once they have cured your body, they need to be excreted out. So, drugs are also excreted and thanks to the kidneys. And then same with the toxins, they're also removed with the help of the kidneys. So, we तीन बातें की हैं: metabolic waste products, drugs, and toxins. So, excretory function है हमारी kidneys का. I told you the difference between creatine and creatinine, and you also know about urea. अब ये metabolic आपके waste products है. In order to assess renal function, you have to check the urea and creatinine level in urine. अगर आपको कहा जाए कि इनमें से एक choose कर लें, either urea or creatinine, either due to a shortage of time or resources, आप renal function का test कर रहे हैं और आपको कहा जाए you have to check either for urea or creatinine. Which one are you going to choose? So my advice would be always go for creatinine. I'll tell you why. क्योंकि यूरिया के लेवल्स एलिवेट होते हैं in any other case scenarios as well, not solely in the case of renal dysfunction. नहीं, जबकि even जब severe dehydration हो, severe vomiting हो, severe diarrhea हो, polyuria हो, excessive sweating हो, high protein diet हो, in all these case scenarios the urea levels they are prone to going up. लेकिन जो creatinine levels हैं they only go up when there is a case of renal dysfunction. So renal dysfunction के लिए जो gold standard test है, gold standard test for renal function is your creatinine. So always opt for creatinine. Obviously, it's best to go for both क्योंकि इसमें होता है क्या है, जब भी you're going to assess the renal function, you need a sample of urine. And this sample of urine, it's sent to the lab, and in the lab, they're going to check both the levels of urea as well as creatinine in the urine, right? But just for extra information, I'm telling you that the gold standard for renal function is creatinine because urea, this solely doesn't certify renal dysfunction. If the levels of urea are elevated, you cannot just associate it with renal dysfunction. No, there may be several other causes for it.
But if the creatinine levels are high, now that's an alarming situation, because that'll tell you that yes, there's some sort of renal failure or renal dysfunction, or there's a chronic kidney disease. So there could be any reason to it. When you talk about nephron, what exactly is a nephron? For example, if you have a kidney, right? If this is your kidney, so in one kidney, how many nephrons will you have? What do you think? You'll have around 1 million nephrons. So that's like a huge number. And then if you have another kidney here, so that will also have a million nephrons. So in total, you'll be having 2 million nephrons. What exactly is a nephron? It's a fundamental, functional, and structural unit, which is a filtering unit of the kidney. Each of the functional units in the kidney consists of a glomerulus and an associated tubule. So it will have a glomerulus and an associated tubule, through which the glomerular filtrate passes before emerging as urine. Now, when you talk about excreting, so I told you that you have to remove creatinine and urea from your body, right? Now, what about drugs? So the drugs, they have to also be removed from the body, but the drugs which are lipid soluble, it's not easy to remove them. तो इन्हें सबसे पहले convert करना पड़ता है into water soluble, और फिर ही these can be removed. और इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कंजुगेशन हो सकती है, या तो कोई चार्ज कंपोनेंट उसको बाहर निकाल दें, मतलब उस प्रोडक्ट का कोई भी चार्ज कंपोनेंट है उसको एक्सपोज करके रख दें. That's also one of the transformation steps. So this is first biotransformation, this is biotransformation 2, जिसमें आपने conjugation की with the help of glucuronic acid. I'll explain that to you with the notes. Like, let's read this as we go. Not water, because it's when you talk about drugs, so drugs to हो गए ना excretory function में. If you're telling me कि what else is there that you can excrete, yes, toxins also. Some people might also say water, but नहीं, water को हम इस category में नहीं डालेंगे, क्योंकि water, it's not just excreted, but it's also conserved. Hence, it comes under the regulatory function. So water, हाँ, हम urine में water बहुत ज़्यादा excrete हो रहा है, but you cannot classify it as an excretory product, because excretory products वो होते हैं जो हमें body को चाहिए ही नहीं होते. वाटर तो ऑब्वियसली बॉडी को चाहिए होता है ना, एंड इट हैज टू रेगुलेट इट, बिकॉज वो एक सर्टेन अमाउंट को रख भी रहा है, कंजर्व भी कर रहा है, एक सर्टेन अमाउंट को एक्सक्रीट भी कर रहा है, ठीक है. सो दैट कम्स अंडर द रेगुलेटरी फंक्शन. सो नाउ यू अंडरस्टूड excretory function is different and regulatory function is different. Excretory is solely the products that you do not want at all, they're removed from the body, you have nothing to do with them. लेकिन regulatory में the products are there which you also need, so you also have to conserve a certain amount, and then you have to excrete the rest of the amount. Now moving forward, I told you that the drug, it undergoes first of all biotransformation, and then it becomes more water soluble, and once it becomes more water soluble, then only it is going to be removed from the body. लेकिन ये जो biotransformation वाला step है ना, ये होगा वैसे liver में, because hepatocytes they're best at this job. तो जो detoxification होती है, biotransformation होती है, वो liver का काम होता है. लेकिन जब वो water soluble हो गया, तब उसे रिमूव करना वो किडनीज का काम होता है, ठीक है. तो डिटॉक्सिफिकेशन ये काम लिवर का है, लेकिन किडनीज का काम क्या है, उसको रिमूव करना. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द किडनीज. उनका काम है वाटर सॉल्युबल ड्रग को रिमूव करना. So anything that is going out through the kidney, this should be water soluble. So this is something that should be on your fingertips. कि lipid soluble चीजें बाहर नहीं निकल सकती हैं, water soluble चीजें ही सिर्फ बाहर निकल सकती हैं. तो first of all उन drugs को हमें water soluble करना पड़ेगा. So this is something that you need to know. Do not get confused. And also one way to remember it is कि ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं तभी दे कैन क्रॉस एनी ऑफ योर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. अब आपकी कौन कौन सी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है? सबसे पहले तो आपकी जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है. एनी ड्रग दैट यू ईट इट गोज फ्रॉम योर माउथ थ्रू योर ईसोफेगस, फिर आपकी स्टमक में एंटर होती है, फिर इंटेस्टाइन्स में एंटर होती है. तो जो जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, उससे क्रॉस कर सकता है ना आपका ड्रग. तो क्यों क्रॉस कर सकता है? क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है. तो जितने भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे दे कैन क्रॉस योर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. जीआईटी म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्रॉस की, ब्लड में गया, ब्लड में जाएगा, फिर ऊपर जाके ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके ब्रेन के पास भी चले जाएगा वो आपका ड्रग. And if the female is expecting, so it can also cross the placental membrane. So lipid soluble substances can cross all of these: GIT, blood brain barrier, and placental membrane. And for example, this is your GIT, right? You had, like, for example, anyone took a certain dose of the drug. This drug went into the GIT, it crossed the GIT mucosal membrane, it went into the liver. From there, it went into your blood and then into the target tissues, and it performed the task. Once it's done performing the task, now it needs to be excreted. Now the person is cured. Now, ये जो drug है इसको remove करने की बारी आई है. अब जब ये लिपिड सॉल्युबल होगा, ये आएगा लिवर में, जाएगा बिलियरी ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ डुओडेनम में खुलता है, राइट, वहां से होता हुआ. लेकिन अब ये लिपिड सॉल्युबल है, तो अभी जीआईटी में तो आ गया, लेकिन अब ये अगर जीआईटी से भी निकलना है, इट कांट
because it is lipid soluble, therefore this mechanism goes in vain. तो वो जीआईटी से भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब वो लिपिड सॉल्युबल है, तो अब वो जीआईटी मेम्ब्रेन क्रॉस होकर वापस से चले जाएगा अंदर, राइट, वापस अंदर चले जाएगा। तो ये वाला एक तो होगा, बिकॉज यू हैव टू मैकेनिज्म्स, राइट, यू हैव टू मैकेनिज्म्स जिसमें आप ड्रग को एक्सक्रीट कर सकते हो। एक आप कहते हैं हिपैटोबिलियरी सिस्टम, जिसमें ये हिपैटोबिलियरी, तो ये लिवर से होता हुआ, बाइल से होता हुआ जीआईटी में आएगा और फीसेस में एक्सक्रीट हो जाएगा। दूसरा होता है आपका रीनल सिस्टम, जिसमें ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, राइट। तो ये फीसिस के लिए है हिपैटोबिलियरी, और ये आपका रीनल सिस्टम यूरिन के लिए। लेकिन ये दोनों जो हमारे बहुत इफेक्टिव सिस्टम्स हैं, दे फेल इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट द लिपिड सॉल्युबल ड्रग, क्योंकि इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, राइट, और यहाँ भी जाएगा एपिथेलियल सेल से वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। So this also failed. So what do you need to do? You have to convert it into a water soluble substance. Water soluble substance में जाएगा, फिर ही excrete हो पाएगा। Water soluble substance में जाएगा, फिर ही ये excrete हो पाएगा in form of urine via the renal system and in form of feces via the hepatobiliary system. So ये green वाला वो है जो water soluble है, and that's like a go ahead signal कि हाँ pass out हो रहा है। So what is the summary? That you have to convert it into a you have to convert the lipid soluble drug into a water soluble substance. And what are the two ways for this? The two ways are the biotransformation mechanisms. This may, first of all, you have to add a highly charged molecule. For example, you can add the glucouronic acid. ये cap है जिसको आप add कर सकते हो, which is produced by hepatocytes. तो biotransformation hepatocytes कर रहे हैं, ग्लूकोयूरोनिक एसिड हेपेटोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पोलर कैप आपने अटैच की, ये पूरा सब्सटेंस पोलर हो गया, कॉन्जुगेशन हो गई, एंड दिस कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। दिस इज बायोट्रांसफॉर्मेशन 2। व्हाट इज बायोट्रांसफॉर्मेशन 1? इसमें क्या होता है, फ्रॉम द सब्सटेंस यू हैव टू ब्रिंग आउट अ पोलर or a highly charged component. Liver does this job of exposing the charged molecule and makes it water soluble. कोई भी इसका जो charged component है ना, उसको अपने expose कर देना है। This way, this entire product obviously it has a charge, that means it's polar, that means it's water soluble. इसी तरह हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये तो ड्रग की बात होगी ना, हार्मोन्स फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, वो भी उसकी भी बायोट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो व्हाट इज बायोट्रांसफॉर्मेशन? इट्स बेसिकली चेंजेस इन द मॉलिक्यूल विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, क्या कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट है वो सब्सटेंस, और उसकी वही ही इट्स फॉर्म चेंजेस फ्रॉम वन टू द अदर, तो ये बायोट्रांसफॉर्मेशन हो गए, एंड दैट्स हाउ इट इज वेरी इफेक्टिवली रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अगेन रीडिंग दिस, highly lipid soluble drugs unable to be removed from the body by hepatobiliary system and the renal system, दोनों fail हो गए। So what's the best way to remove them? It is to convert them into water soluble. First is to add the glucouronic acid, which is a highly charged polar cap, which is produced by hepatocytes, ये conjugation हो गया। और दूसरा है कि you have to bring out a charged component, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो हमने ड्रग्स को भी रिमूव कर लिया, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव कर लिया, टॉक्सिन्स भी इसी तरह रिमूव हो सकते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आई फेल वाज इंपॉर्टेंट, आई थॉट टू शेयर विद यू। मुझे दिस इन्फॉर्मेशन दिस साउंडेड सो फैसिनेटिंग टू मी। इसमें क्या लिखा है कि जैसे वाटर कंपोनेंट कम होगा ना, एजिंग ज्यादा होगी। सो दिस इज लाइक अ वेरी गुड रीजन फॉर एनीवन एंड एवरीवन टू स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर, बिकॉज अगर वाटर कंटेंट ज्यादा कम होगा तो एजिंग ज्यादा होगी, एंड एजिंग ज्यादा हुई तो मतलब दैट पर्सन विल स्टार्ट लुकिंग ओल्डर, राइट, एंड none of us want to look older. So the best thing is कि water content बढ़ाएं and aging को कम करें. Women age faster because they have lower water content. Women have low water content. That's the reason the women age faster, and this is a very known fact that women age faster. That's the reason in many countries, very sadly, there's this stereotype, and there's this thing where they want to get a female married off earlier because they're like, oh my god, her age is passing and she's going to be looking older by the time she's a certain age. So that's very sad. But anyways, we know the scientific thing behind it is that if the water content is lower, the aging will be faster. And in the females, the water content is actually lower. That's the reason they age faster. Their water content is 50% of their body weight. So our body content is 50% of our body weight for females, right? How about males? For the males, it's 70% of their body content, so the body weight. So that's a lot. And how about newborns? See, newborns, their water content is 75%. So, see, the water content is so much more. That's why obviously they look so much younger, right? So, you are understanding the science behind the aging and all of that. Now, moving forward with the regulatory function, what are the three things that need to be regulated? Very important. Water. We already classified it into regulatory function, right? Water needs to be conserved as well. So that's one thing in which that's one thing that you need to take care of when you're talking about regulation by the kidney. Water, then electrolytes, and then the acid base.
For electrolytes, there are certain values that you need to have on your fingertips, which is sodium. You need to always remember this range. For potassium, also remember the range. For chloride, also remember the range, as well as the units. For bicarbonate, also calcium, also you need to learn these values, right? And if, for example, if you're forgetting all of these, but there's one value that you need to be very careful about and you need to learn, and it's very important, and that would be potassium, which is 3.5 to 5.3 milli equivalent per liter. So let's just check potassium. Yes. This is very important because it's a very small range. So if there's any fluctuation, that will be very fatal. That can be fatal. If there's hyperkalemia, so you need to ensure that this is very well regulated. And normally, the substances they're controlled at entry level. For example, iron. If you're taking it in the diet, once it goes into your GIT mucosa, your GIT is going to see that okay, this is a certain range of iron that I need to have in the body, and let's not take in more than this, or let's not take in lesser than this. So it's going to remain within the limit, right? So this is regulated at the entry level. But for potassium, this is not regulated in the body at the entry level. Instead, it's regulated at the exit level. इसका क्या मतलब हुआ? For example, आप जब भी खाने में खा रहे होते हो तो आप कभी भी पोटेशियम के बारे में नहीं सोचते कि अच्छा पोटेशियम कितना होना चाहिए. But you often always think about iron कि अच्छा iron होनी चाहिए डाइट में, iron का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. But for potassium, you just keep eating and you don't even care because your body is going to regulate it on its own. होता क्या है, आप खा लिया आपने orally, it's taken in frequently, but when it's in the kidneys, your kidneys are going to check कि okay, ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है पोटेशियम की, लेट्स एक्सक्रीट सम. तो वो खुद ही एक्सक्रीट कर लेगा, और अगर कम होगा तो काफी ज्यादा को रीअब्सॉर्ब कर लेगा. सो सिंस पोटेशियम इज रेगुलेटेड एट एंट्री लेवल, मोस्ट ऑफ इट इज एब्सॉर्ब एट द एंट्री लेवल. तो एंट्री लेवल पर सारा पोटेशियम जितना भी आपने खाया सारा एब्सॉर्ब हो जाएगा. जीआईटी मिक्रोजा में से ऑल ऑफ इट विल बी एब्सॉर्ब. लेकिन किडनीज में जाकर द किडनीज आर गोइंग टू कीप अ चेक कि अच्छा कितना आप रखना चाहिए और कितना इसको निकालना चाहिए. So this was extra piece of information that you need to know. अच्छा, अभी तक you may be wondering कि अभी तक तो हमने kidneys शुरू ही नहीं की, all that beautiful anatomy of the kidney, where is that? So hold on for a second because these are some very important pieces of information, और साथ साथ मैं आपको extra information भी दे रही हूँ ताकि you can keep a track of things. And also it's very important that you know everything, especially when you're studying a topic, right? And also मैं आपको इस topic को I'm trying my best to make it interesting so that you can start loving the subject and especially this topic. Kidneys, they're so beautiful, so you need to know everything about them. Now we know about the excretory function, urea, creatinine, remember, not creatine, right? Or gold standard renal function test कौन सा था? Creatinine. And then drugs also, you know, conjugation होती है उनकी biotransformation 1 and 2, right? Conjugation of a polar इसका जो component है उसको expose करना charge component को. Drugs and then toxins also they're excreted. Regulatory में क्या था? Water को regulate करना. Then you had your electrolytes. अभी हम electrolytes पढ़ रहे थे और उसमें भी सबसे important कौन सा है? Potassium, which is regulated at the exit level. अब iron कहाँ regulate हो रहा था? At the entry level. ठीक है, उसके बाद हम अब किसका पढ़े? Acid base balance is also very important, right? उसके बारे में बहुत extensive discussion हो सकते हैं. There'll be a proper lecture on that, so we're skipping that for now. Moving forward, the endocrine function and the metabolic function. Let me record a separate video for that.